they have two or more different type of elements, and they combine together to form molecules, and these molecules are having different properties. So a chemical, what is meant by that chemical reaction? Chemical reaction is nothing but, more simply and very, we can simplify it, what is meant by the chemical reaction. So in simple way, chemical reaction is defined into a simple way, very simple way. Chemical reaction is simplify, you define the chemical reaction in a simple way. How you can define the chemical reaction in a simple way? Just you can say it is the reorganization. It is the reorganization of an atom. It is the reorganization of an atom. Means old bond are break and new bond are formed. How it can be possible? A very simple reaction. You can have any simple, very simple reaction. So what happened? So it is a nitrogen gas reacting with hydrogen gas. Very simple reaction. H2 gas and nitrogen bond are break and nitrogen hydrogen bond are formed. So to form a product molecule, that is it is a very simple chemical reaction. Simple chemical reaction. It is just a reorganization of an atom. So it is in a GAT chemistry, you have to understood why why old bond are break and why new bond are formed. What is the reason to old bond? You have to need to break that old bond and to form a new bond and new molecules. So properties of nitrogen and properties of hydrogen, this gas are different, and to form a new molecules which having the different property, ओल्ड वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, न्यू वाले बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे. मतलब ओल्ड वाले के जो प्रॉपर्टी है, ओल्ड मॉलिक्यूल्स, nitrogen and hydrogens, old molecules having different property, and to form a new molecules having different chemical properties. So you have to understood how it can be happen. Just you have to be what is meant by the chemical bond. So chemical bond is in general case, what is meant by that a chemical? What is how you can define the chemical bond? So chemical bond, now I'm not asking to you a type of chemical bond. I'm only asking to you what is meant by the chemical bond. How chemical bond is chemical bond is formed. So chemical bond is nothing but a force present between the atom to hold atom together. A force present between the atom which atom can hold together. वो force है. जो फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल, एक टाइप का फोर्स रहेगा जो फोर्स उन एटम को सही से बांध के रखेगा, उसे हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड, उसे हम कहेंगे बॉन्ड. अ केमिकल फोर्स which can be hold atom together is called chemical bond. So it is about a chemical bond. So now we have a certain law. Now it is a law of chemical combination. We have a law of chemical combination. What is meant by that? Law of chemical combination. Law of chemical combination. So first one is the law of conservation of mass. Law of conservation. Law of conservation of mass. That is, it is a very important law. Yesterday we discussed it, but you have to demand it. You can revise it. New people are joining, and they have a certain says, sir, please repeat the law. All the laws you have to be studied, and you have to explain in yesterday's lecture. So what is meant by the law of conservation of mass? Student, you have to know the law of conservation of energy. What is that? Like a law of conservation of energy says, energy which neither be created and nor be destroyed, and it can be converted one form to another form. That means energy are interconvertible.
Yes, energy is a interconvertible, one form to another form. You change the form of energy. Means you have the electrical energy converted into chemical energy, and chemical energy again converted into electrical energy. So vice versa, energy are interconvertible. Means you never to able to create the energy. You have a never create the energy, and you never destroy the energy. You can have a interconvert the energy one form to another form. For example, kinetic energy converted into electrical energy, electrical energy converted into potential energy converted into mechanical energy. So the heat energy converted into mechanical energy. So like this, so interconversion is possible, and you have to only be able to interconvert that energy. So like the energy, you have a mass. So mass and energy, there is a relation. Mass and energy, greater the mass, greater is the energy. Lesser the mass, lesser is the energy. So how the law of conservation of mass is comes to, so like a law of conservation of energy, so like a law of conservation of energy, similar law of conservation of mass. So in the, it can play very important role in a chemical reaction, because whenever you have to reaction perform, any reaction you have to perform. For example, a simple reaction in the you can have a acid is reacted with hydrochloric acid, is reacted with a strong base, acid base reaction, and to form a product, that is the NaCl and H2O, water and salt is generated. So this simple reaction also obeys the law of conservation of energy, law of conservation of mass. How it can be obeyed the law of conservation of mass? I have tell you statement. Statement is very important. What says statement? स्टेटमेंट हमें क्या कहेगा? स्टेटमेंट हमें क्या बताएगा? स्टेटमेंट हमें यही बताएगा कि आपने जितना भी मास लिया रिएक्टेंट का, आपका टोटल रिएक्टेंट का मास, और रिएक्टेंट में भी एक रिएक्टेंट हो सकता है, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं, चार भी रिएक्टेंट हो सकते हैं. सो जितने भी आप रिएक्टेंट लोगे, whatever you have to take a reactant, जितने आप रिएक्टेंट लोगे उतना उसका मास, और प्रोडक्ट में जितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मिल सकता है आपको, दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तीन प्रोडक्ट मिल सकते हैं, चार प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप यू कैन ऑब्टेन. सो द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मास कभी भी चेंज नहीं होगा. सो मास नेवर बी चेंज. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एनी रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो आप, फिजिकल रिएक्शन ले लो, मास कभी चेंज नहीं होगा. मास नेवर बी चेंज. दैट मींस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. लॉ स्टेट दैट total mass of product is equal to total mass of reactant. Total mass, the sum of mass of reactant is equal to the sum of mass of product. So we can find out. So it's having the 35, its molar mass is 35, and NaO is molar mass is 40, 39 and 40, maybe 40 gram, and you have to be here NaCl 23 plus, here 23 plus 34, 4, 5, 6, 7, 7 and 3, 5. There is a 57, and this one is 18. So 57 plus 18, how much? 5, 5, 6, 7, 75. So this total comes to 75. And this 35 plus how much? 35 plus 14. How much it was? 5, 4, 5, 6, 7. Again, this was the total mass of reactant is 75 gram. So look here. Total mass of reactant is equal to, hence the law are proved. Total mass of reactant is equal to total mass of product. That is the law of conservation of mass. You can take any reaction. आप कोई भी reaction ले लो और उसका for example, you can find out the mass. Suppose hydrogen gas is reacted with two times of H2 gas reacted with O2 gas, and to form 2 times of H2O gas or H2O gaseous or liquid form में temperature ज़्यादा होगा तो gaseous में होगा. So it is 4 gram. This one is 32 gram, and total is how much? 34, 35, 36. 36 gram.
And now what is the mass total is into 2, that is 36 grams. So total mass is also 36 grams. So total mass of reactant and total mass of product is, hence the law are proof. Means आपको क्या करना है यहाँ पे, एसपीआई में थोड़ा सा theoretical question may be asked. कैसा question, how the what is the question is, question how mass is does not change during the chemical reaction. मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है, कभी भी मास चेंज नहीं होगा। कोई भी रिएक्शन आप कर लो, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ओके, सो मास इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट वन हमने लिया था नेक्स्ट हमने लिया था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। Law of definite proportion. Law of definite proportions. So what is the chemical compound obtained by different sources? The chemical compound obtained from different sources. Different sources, source में भी change, source कहीं से भी आप ले लो, different sources always contain same percentage of, always contain same percentage of, always contain the same percentage of, always contain the same percentage of each constituent element, each constituent elements. Look, each constituent element, what is mean by the law of definite proportion? Means आपने सैंपल लाया, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला कि यू वाटर लाओ, 1 लीटर वाटर लाओ कहीं से भी, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। अब कोई बच्चे, कुछ बच्चे गए ही गोस किसी तालाब में गए, तालाब में से 1 लीटर वाटर लाया। कुछ बच्चे गए वो समंदर से 1 लीटर वाटर लाएंगे, कुछ बच्चे गए वो बोरवेल से 1 लीटर पानी लाएंगे, कुछ बच्चे गए डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे और किसी होटल में जाएंगे वहां से 1 लीटर बॉटल लाएंगे। सो और कोई बच्चा डायरेक्टली जाएगा, कोई किसी गटर का पानी लेके आएगा 1 लीटर, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन 1 लीटर वाटर। सो एवरी वाटर का सैंपल आप कहीं से भी लाओ, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है विच डज नॉट चेंज, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी सैंपल लाओ, आपका जो केमिकल कंपोजिशन है, एलिमेंटल कंपोजिशन है वाटर का, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका जो कंपोजिशन है दैट कंपोजिशन नेवर बी चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यही है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो उतना ही प्रोपोर्शन में हमें मिलेगा, आप पानी कोई भी ला लो उसमें उतना ही हाइड्रोजन रहेगा जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर सेम, एलिमेंटल कंस्टिट्यूशन डज नॉट चेंज। यू चेंज द सैंपल, कहीं से भी आप लाओ पानी, कहीं से भी लाओ, भले आप अंटार्कटिका में जाओ वहां से पानी लाओ, भले आप पानी समंदर से लाओ, पानी आप कहीं से कहीं कुछ बोरवेल से लाओ, कहीं और से, कहीं से भी पानी आप लाओ, वो पानी का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion. Now we can proceed. The next one is, it is a law of definite proportion. So we have to law of multiple proportion. Next one is the law of multiple. Law of multiple proportion. What happen in the law of multiple proportion? If 2 elements can be combined to form more than one compound, if two element combine together two element combine together to form more than one compound, to form
more than one compound, more than one compound, to form more than one compound. Masses of one element combined with fixed mass. Masses of one element, masses of one element, masses of one element, masses of one element combined with fixed form of combine with fixed form of masses of other elements are the ratio of small whole numbers, are the ratio of small whole number are the ratio of small whole number, whole, I think HWHO, whole number. So how it can be possible masses of small whole number? For example, you have to be NH3, earlier example, NH3 and N2H2 and N2H4. Look this example. So here is at nitrogen is 14 and hydrogen is 3. Nitrogen is 28, hydrogen is 2. Then nitrogen is 28 and hydrogen is 4. So you look here, nitrogen, how the nitrogen are combined with the hydrogen. The 14 is to 3, 28 is to 2 and 28 is to 4. So simple whole number, the combination are occur in the simple whole number. Okay, so simple whole number combination you have to got in this way. So that is the law of multiple proportion. So 14, 20, 20, so like the multiple proportions. So one same element can be combined with different proportions. So that is the law of multiple proportion. So here about it is about the law of multiple proportion. Okay, so you understood yesterday. I will justify it and give the more detailing about the law of multiple proportion. Then last one, law of conservation, law of constant, law of reciprocal proportion. So law of reciprocal proportion, simple. So you have to be H2O and you have to be D2O. So reciprocal, here is the 2s to 8 and here is the 4s to 8. So look here, the deuterium and hydrogen. So combination of deuterium and hydrogen, there is a proportion are changed, reciprocal. So 1, 2 and one time is combined by 2, mass 2 and another time is combined by mass 4. That is a law of reciprocal proportion. So we have a Avogadro's hypothesis, then we have a atomic mass. An atomic number, very important is atomic number. So what is meant by that atomic number, which is denoted by Z? So atomic number is nothing but total number of proton present in an atom. Total, it is the sum of total, or you can say total number of proton present in an atom. If you have any doubt, you can comment in comment box. आप comment box में comment कर सकते हो अगर आपको कोई doubt है तो please comment box में react हो जाओ आपको अगर कोई doubt होगा तो. So proton is there. So which is a positive center and there is an electron. Electron may be exchangeable. It is a picture of atom. So electron, this electron. So inside the nucleus there is a proton and proton number can be decide the atomic number of any elements. Suppose you have a hydrogen having only one proton, so its atomic number is 1. Then carbon having 6 proton, so its atomic number is 6. Then nitrogen having 7 proton, so atomic number is 7. Oxygen 8 proton, atomic number is 8. So likewise beryllium I'm having atomic number is 4 at 4 proton. Then sulfur having atomic number is 16 proton in atom. So that is called atomic number. It is a very basic concept for each element. You cannot consider the electron
एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी एक्सचेंजेबल, आफ्टर इलेक्ट्रॉन आप कभी कभी एक्सचेंज हो सकते हैं, इट मे बी। देखो, अगर आपने एटॉमिक नंबर के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में भी एक्सचेंजेबल, कभी कभार एक्सचेंज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ दैट मैटर। वो मैटर वो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मींस इट्स अनदर थिंग्स, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयर द इलेक्ट्रॉन, और पार्टली donation of electron. So it is the atomic number. It is a very important concept, because how much proton is present in an atom is called atomic number. So next one is the atomic mass number. Atomic mass number. Atomic mass number. What is mean by that? Atomic mass number or atomic weight. Atomic mass number. So atomic mass number is which is denoted by A, and which is equal to the total number of proton and total plus total number of neutron, how many proton and neutron is present. So P is the proton, so the symbol of P is the proton, number of proton, total number of protons, that is the P1, and plus total number of neutrons, that is the N0. So atomic mass number is nothing but how many proton and neutron present in an atom. We cannot consider the number of electron. याद रखो, यहाँ पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर consider, you do not consider number of electron, because why? Because mass of electron is negligible. That means mass of electron is very small, and it is a negligible as compared to mass of proton and mass of neutron. So mass of neutron is greater than mass of proton, then very greater than mass of electron. Remember these things. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल. इलेक्ट्रॉन हैविंग निग्लिजिबल मास. निग्लिजिबल मतलब किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी हाई. प्रोटॉन एंड इसका थोड़ा सा इसका ज्यादा है, थोड़ा सा इसका ज्यादा है. मस न्यूट्रॉन का मास आर ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंपेयर, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 kg है, एक इलेक्ट्रॉन का मास, व्हाट आई से, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 kg है, तो प्रोटॉन का मास कितना होगा? 10,000 kg. मीन्स 27, 28, 29, 31, 32 मीन्स 5 zeros, 10,000 kilogram mass of proton. A 1 kg and 10,000 kg, very big difference. So atomic mass number is nothing but total number of proton and neutron present in an atom is called atomic mass number. Okay, it is about atomic mass number, and you doesn't bother about the how it can be take a standard C13 and all these things. So you can have a simple you have to be calculate its number of proton and number of neutron and add it, and it is you got an atomic mass number. So then molecular mass. Molecular mass. So mass of molecule, a complete molecule, complete package, mass of molecule. How you can have the mass of molecule? So mass of molecule, how you can define mass of molecule? Molecular mass, the total mass of total atomic mass of each element in a molecule called molecular mass. The total you can define like this: the total atomic masses, the total atomic masses of each element, the total atomic masses of each element present in an total atomic masses present in an element in a molecule is called molecular mass. Molecular mass.
For example you have to be NaOH, sodium hydroxide. So atomic mass of sodium is 23. So how many sodium is present? 23 into 1 is equal to 23 gram. Then atomic mass of hydrogen, calculate, 16. So how many oxygen is present? Only one oxygen, 1. So how much it was? 60 gram. Then next element is hydrogen. So 1. How many hydrogen present? 1 hydrogen. So it is having 1 gram. And this is 6, 6, 7, 8, 9, 10, 0. And this one is 1, 2, 3, and this one 4. That is the 40 gram. How much? Atomic mass of sodium hydroxide is 40 gram. Okay, that is the 40 gram is the atomic mass of the sodium hydroxide, NaOH. And you can find out lot of example how much is atomic mass. So let's try to solve. Yesterday I think we have यहाँ तक आए थे हम शायद yesterday में. Okay, so we can revise the concept. So can you have we have a new concept, that is the mole concept. The mole concept. So mole concept based on certain consumption. Mole concept is a very important mole concept, which is denoted by n. Mole concept, n, number of moles, n, or you can say mole concept. So we are n, we can the amount of substance which contained, it is the amount of substance which contain, the amount of substance which contained, the amount of substance which contained number of elementary particles, number of elementary particles. So elementary particles, what is which one elementary particles? So there is a number of elementary particles. So particles, there is a particles means they may be electrons, they may be protons, they may be प्रोटॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, they may be neutrons, they may proton, neutron, electrons, and they atom भी हो सकते हैं, they may be atoms, they may be molecules, they may be ions, ये एक्सेट्रा, ये सब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब हो सकते हैं. सो एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, as the number of atom present in 12 gram of C12, 12 gram of C12 atoms, C12 isotopes है वो कार्बन का, C12 atoms. So it is a mole. So how you can find out? So you can say 1 mole. So when we say 1 mole is equal to 6.023 into 10 raised to power 23 particles. 1 मोल में इतने ही आएंगे. आप देखो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 मोल. आप देखो, आप जब ऐसा बोलोगे, व्हाट यू से, इफ यू से 1 डजन ऑफ बनाना, व्हाट यू गेस, आप क्या समझोगे? मतलब 12 क्या है? बनाना है. 1 डजन ऑफ बनाना, 1 डजन ऑफ बनाना, 1 डजन ऑफ बनाना, 1 डजन ऑफ एप्पल, 1 डजन ऑफ एग, 1 डजन ऑफ पाइनएप्पल्स, 1 dozen of watermelon, 1 dozen. So 1 dozen is a fixed amount. So like that, 1 dozen is fixed amount. So like that, 1 dozen means how much? 1 dozen means it is the fixed amount. और वो किसके अमाउंट हो सकती है? किसी के भी अमाउंट हो सकती है. 1 डजन
एग हो सकते हैं, 1 डजन पाइनएप्पल हो सकते हैं, 1 डजन बनाना हो सकते हैं, 1 डजन एप्पल भी हो सकते हैं, 1 डजन कुछ भी हो सकता है, 1 डजन बॉयज हो सकते हैं, 1 डजन गर्ल्स भी हो सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है 1 डजन। सो 1 डजन इज अ फिक्स अमाउंट। उतना जितना आप कितना 1 डजन में इतने पार्टिकल से, बस 1 डजन में 12 ही पार्टिकल आएंगे। सो वैसे ही सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। 1 मोल अगर आप बोलेंगे तो इतना ही पार्टिकल आएंगे। पार्टिकल में क्या हो सकता है? पार्टिकल में एटम हो सकता है, पार्टिकल में मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल में आयन हो सकता है, पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पार्टिकल में प्रोटॉन हो सकता है। सो मे बी पॉसिबिलिटी पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है। सो 1 मोल मीन्स दिस फिक्स अमाउंट। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। इतने ही आएंगे, 1 मोल में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं चलेगा। सो व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड 1 मोल, 1 मोल मीन्स दिस इज दिस अमाउंट, फिक्स अमाउंट विच डज नॉट चेंज। अगर आपको 1 मोल में द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स to as the number of carbon atom present in 12 ग्राम of C12 atom, 12 ग्राम C12 एटम में इतने ही एटम प्रेजेंट होते हैं। सो 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स आएंगे। सो 1 मोल इज द फिक्स अमाउंट। एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट द 1 मोल? Let's start with number of moles. How you can calculate the number of moles? Number of moles. Number of moles n, which is equal to the amount of substance in gram is equal to amount of substance in gram divided by molar mass in gram. Mass in gram. Molar mass, whatever its molar mass in gram. For example, number 1 question is find the number of moles present in 440 gram of CO2 gas. Okay, so you have to, what you have to give an amount दिया है आपको, कितना अमाउंट दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का? 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ moles present. So how you can find out? Let's calculate the so number of moles. So firstly, what is the molecular mass of carbon dioxide? So carbon 6 and 12. So how much it was? 12. How many carbon? 1 carbon. So 12. Ones are 12 gram. Okay. So then oxygen 8. How many? 16. How many oxygen atom? 2. 16 into 2. How much it was? 32 gram. So the calculation is this 4 and this 4 gram. It's 44 gram. So Yan is equal to 440 gram given divided by 40 gram, 44 gram. This is comes to 10 moles. N is equal to 10 moles. So can you find out another example? So you can try the another example. Second question, find out the number of moles present in 600 gram of
P4 gas. Let's find out and tell me in chat box. First you calculate what is the molecular mass of P? Sir, P1531. So how much it 5 was? mole. 31 multiplied by 4. How much it is? 31. 4. 4 ones are 4. Is it 12? 12. 24 gram. And therefore number of moles is equal to 600 gram divided, sorry, how much given is that? 600 gram divided by 124 gram. Whatever may be answer, you have to be calculate and find out the answer. 5 moles. Okay, let's we have to be the some other formulas for your practice and इसी फॉर्मूले पे आएंगे, ऐसा नहीं है, और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेकंड फॉर्मूला, number of molecules, number of molecules is equal to number of, how we can find number of molecules, number of moles into Avogadro's number is equal to number of moles into n of a, n of a. And what is the value of n of a? So n of a is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles. Okay, then next formula is number of molecule in 1 gram compound. Number of molecule in 1 gram compound. 1 gram. Number of molecule in 1 gram compound, which is equal to n of a divided by gram molar mass. Gram molar mass. Okay, write down this example formula, gram molar mass. Yeah, some comment is coming. What is this is a 335 5 moles. Okay, very great. 150 31. Okay, I got your answer. पता है आ रहा है आपका. Are you going to well direction? Let's compare. You have to compare the. Okay, so can you have more examples?
Okay, you can find out the number of molecules present in. Let's question. You can find out number of molecules. Number of of molecules present in 180 gram of water. Find, ऐसा करो, find. Okay, calculate करो. Find the number of molecule present in 180 grams of water. Let's calculate. Find out and comment the answer in chat box. Ten moles, sir. Yes, very good. Very good, Om. I got your answer. Om, I got your answer. Then find out the number of molecules, number of moles, number of molecules. Number of molecules you have to find out. Om. चलो कोई डाउट होगा तो माइक पे ऑन करके, माइक ऑन करके रखा है मैंने. यस, वेरी गुड. मीटिंग ग्रुप गायत्री, यू गॉट आंसर. बट व्हाट इज हाउ मच? यस यस गायत्री, यस सिद्धांत स्वामी, यू गॉट आल्सो करेक्ट आंसर. Siddhant, you got a correct answer. What about other people's? They are only watching the lectures. They are nothing to doing with the example. बाकी के लोग क्या कर रहे हैं सब? बाकी के क्या कुछ सिर्फ बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं क्या? Ram Patil, yes, Ram Patil, you got only number of moles. You can find out the total number of molecules. Yes, Ashank, find out further calculation. Yes, Om, yes, you got answer. Om, correct. Aryan Gorpade, you also correct answer. Ashank Kanalve, you meeting group chart 10. 10, yes, Ashank, calculate the answer. Sarthak, yes, Sarthak, okay. 24, 23, very good, Sarthak. Yash Marekar, meeting group chart 10, only 10. So, Yash, what do you have to say? Payal Sangle, okay, you are 10 mole. Payal, number of moles you have to find out. Payal. Parth Channe, yes, Parth, okay, your correct answer. Vedant, you find out the number of moles, not only one moles में कितने वो नहीं पूछा. Yes, number of moles. Biju, yes, you got a correct answer. Yes, Yog, yes, Yog, you have to correct answer. Moles in terms of number of atoms present in an 180 grams of water. Siddhi, yes, Siddhi, you got correct answer. Okay. Yes, Zogdande, you can also correct answer. Vaishnavi, yes, you can have answer. Correct answer, Vaishnavi. Vaishnavi Pawar, you got the correct answer. Okay. Then yes, okay, okay, you got a correct answer. I will understand. You will understand this formula. Nothing is there. Just you can some how calculation. So we have to find out the charge mass, charge on electron, charge on proton, and charge on electron. So that is the name. Make a column name, and then the name, and this column you have a charge, name, charge, and name and charge, mass, charge and mass. So name, first one is electrons. Electrons denoted by E negative. What is the charge on electron? That is a minus 1.60.
You can involve up to 2 digits, 1.60 into 10 raised to power minus 19 coulomb. That much amount of charge. And mass of electron 9.10. Mass of electron 9.10 into 10 raised to power 31 kilogram. That is the mass of electron. It's a very, very less. Then you have a proton. Another particles, it is protons. So proton is symbol is P and इसे ऊपर रहेगा positive. So it's how much it is the same charge, but it is in positive magnitude. 60 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And the mass, look here, mass is different. Mass of proton 1.60, 1.67. 1.67 into 10 raised to power 27 is there. Minus 27, it is also in kilogram. Then, mass of neutron. So, neutron. Next particles is neutrons and its symbol is N0. And its mass, its charge is no charge, 0. No charge, and mass is 1.67. 1.67 and something is 49 into 10 raised to power 27 kilogram. So remember this charge, it is a very important charge for you. Compare the mass 27 somehow thoda sa jasta hai, and that is a very, very less. Charge are same. Proton and electron having same charge. Remember this charge. This very important charge. 10 raised to power 27 kilogram. थोड़ा सा ऐसा लिखो इसको. 27 kilogram. Yes, if you have any doubt, then please tell me. Yes, boys and girls, please ask me if you have any doubt. प्लीज कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स खुला है. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करो. और उनके जो चार्ज मास है ये याद रखो, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज एंड मास, प्रोटॉन हैविंग चार्ज एंड मास, न्यूट्रॉन हैविंग चार्ज एंड मास. इतना आप याद कर लो, अच्छे से रट लो इसको. हम आगे इसका इस्तेमाल है, आगे हम आपको बताएंगे कि चार्ज एंड मास. अब हम कल पीरियोडिक टेबल अगर स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए चाहिए हमें कि इलेक्ट्रॉन का. अब कंपेयर याद क्या रखना है आपको, कंपेरेटिवली यू कैन अंडरस्टूड द मास ऑन 27 मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो 27, 28, 29, 30, 31, 4 times. How much? 4. There is a gap. 31 and 27. 27 is bigger number than 31. Minus 31 is a small number than minus 27. So you can compare the mass of electron and mass of proton. Mass of proton is higher than mass of electron. So this comparatively you can understand and compare the mass of electron and mass of proton. So charge, look here, neutron no charge, neutron having no charge, it is a neutral, electrically neutral. मैं सिर्फ नाइदर भी ये पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होगा और निगेटिव की तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा. सिर्फ इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन के पास सिर्फ मास चार्ज नहीं है. और इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास चार्ज भी है, अच्छा खासा चार्ज भी है और अच्छा खासा मास भी है. प्रोटॉन हैविंग सच एंटिटीज, ऐसा पार्टिकल है प्रोटॉन जिसके पास चार्ज भी है और मास भी है. लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज अच्छा खासा है लेकिन मास बहुत कम है. इसलिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज इट इज अ लाइट वेट पार्टिकल्स. वो हल्का पार्टिकल है इसलिए वो रिवॉल्व करेगा. ओके, सो यू कैन कंपेयर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, एंड यू कैन कंपेयर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of proton, mass of
neutron. So you can compare it for your convenience. Okay. So let me you have any problems to ask me please. मैंने mic on कर दिया, आप बताओ कोई problem है तो please tell me. सर Yes. सर हाँ हाँ आपने जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना, हाँ वाटर, हाँ, हाँ तो वाटर का मॉलिक्यूल लेना है हाँ वाटर का मॉलिक्यूल लेना है ना. यस. और वन वाटर का उस कितना है देखो. एक देखो यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम आएगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे उसके, कितना दिया था, 180 ग्राम दिया था बराबर. डिवाइडेड बाय कितना, 18 ग्राम. सो कितना आएगा ये, 10. 10 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर n ऑफ a आ जाएगा वो कितने. सर सबका मॉलिक्यूल्स लेना है क्या? मतलब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल है तो 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा. देखो आपने मोल्स निकाला, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23. इतने मॉलिक्यूल्स है 1 मोल में. तो 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल, उसको मल्टीप्लाई करो. 023 इंटू 10⁻23 मोल्स और ये इंटू 10. तो ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स. इतना आया नहीं आपका. नहीं सर, समझ में नहीं आया था कैसे करना है. ठीक है वो कैलकुलेशन आप अच्छे से करो. अभी 2 मिनट है, आपको कोई डाउट होगा तो पूछो जल्दी प्लीज, टाइम इज ओवर. और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये अच्छे से याद रखो, फिर बाद में आपको लगेगा ये. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सर मस्ट नो. ऐसे क्वेश्चन हाँ वैसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे. कैसे, इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा. विच वन एलिमेंट हैविंग हेवीएस्ट, दैट इज द न्यूट्रॉन. विच वन एलिमेंट्स हैविंग लाइटेस्ट, लाइट पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द चार्ज, हाउ मच चार्ज